everyone, so let's move towards our today's topic, which is umbilicus. Now, what is umbilicus? It's the topic related to anterior abdominal wall. Now, as you know that the anterior, obviously as the name indicates, the abdomen, the anterior part of the abdomen, the wall which is present anteriorly is called as anterior abdominal wall. Now, on that wall, you will easily see a scar, a depression, a groove, a pit at the level of L3 vertebrae or L4 vertebrae, and that is called as umbilicus. ठीक है, उर्दू में जिसे आप नाफ भी कह सकते हो, तो umbilicus. And that umbilicus is basically remnant of umbilical cord. Basically is when the umbilical cord detaches from our body, that will cause a depression, that will cause a scar, and that is called as umbilicus. Okay, now umbilicus is also considered as watershed. Now what is watershed? Why it is called as watershed? Because it is basically a demarcation point. Okay, demarcation point means कि ये एक लेवल है जिसके ऊपर जितने भी लिम्फेटिक्स हैं वो लिम्फ नोड्स में ड्रेन होंगी, मतलब वहाँ ऊपर के लिम्फ नोड में ड्रेन होंगी, और जो इसके नीचे जो लिम्फेटिक्स हैं वो नीचे वाले लिम्फ नोड में ड्रेन होंगी. ठीक है, और जो नीचे वाले लिम्फेटिक्स होंगे, जो अम्बिलिकस के नीचे लिम्फेटिक्स होंगे, वो नीचे वाले लिम्फ नोड में, लोअर लिम्फ नोड में ड्रेन करेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट इट्स वेरी शॉर्ट टॉपिक बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो बहुत शॉर्ट नोट मौजूद होगा इजी मेडिकल वॉल्यूम 2 में, इजी मेडिकल बुक वॉल्यूम 2 में. सो उसमें एक शॉर्ट नोट है, उसको बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा. और उसमें भी यही सारी बातें कि भाई अम्बिलिकस में जो पोर्टल वेन है वहाँ पे एनास्टमोस फॉर्म करती हैं, वहाँ पे सारी ब्रांचेज आके पोर्टल वेन की मिलती हैं. नाउ इफ़ दोज वेन्स विल बिकम डायलेटेड, इट कॉल्ड एज कॉपट मेड्यूसा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉपट मेड्यूसा इज़ द डायलेशन ऑफ द anastomose, dilation of the portal vein around the umbilicus, because in the around the umbilicus the portal vein are forming the anastomose. Okay, so this was the whole topic, and very short topic but a very important topic of umbilicus. Till then, work hard, study hard, and good luck. Take care. Bye bye. Thank you.